नमस्कार, मी श्रीमती जयश्री वसंत चोळके उर्फ दाभाडे. नमस्कार, माझे नाव सुषमा किशोर पवार. नमस्कार, माय सेल्फ मिस्टर संग्राम सर. नमस्कार, माझं नाव संगीता खंडू गवांदे. कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन यांच्यातर्फे हे जे प्रशिक्षण आयोजित केलेलं आहे, या प्रशिक्षणामध्ये अगदी ट्रायबल एरियामध्ये आम्ही जे शिक्षक काम करतो, तर त्या ठिकाणी असणारी जे विद्यार्थी आहेत त्यांना जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काय केलं पाहिजे यासाठी एक छान प्लॅटफॉर्म मला या 2 दिवसामध्ये इथे बघायला भेटला. या 2 दिवसाच्या ट्रेनिंगमध्ये पहिल्या दिवशी सेल्फ लीडरशिप, स्वनेतृत्व काय असतं, कसं करावं हे आम्ही शिकलो. दोनही सेशन झाले. खूप इंटरॅक्टिव्ह अशा प्रकारचे सेशन्स आहेत. त्याचबरोबर या सेशन्स मधून आम्हाला जे टेक टूल्स आहेत, डिजिटल टेक टूल्स आहेत, याची माहिती दिलेली आहे आणि खूप साऱ्या पद्धतीच्या गेम्स असतील, खूप साऱ्या पद्धतीच्या ऍक्टिव्हिटीज असतील, ज्या या ठिकाणून आम्हाला लर्न करायला मिळालेल्या आहेत आणि याचा उपयोग नक्कीच आम्ही आमच्या मॉडेल स्कूलमध्ये गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी याचा उपयोग होणार आहे. ते FLNची उद्दिष्ट कशी साध्य करू शकतो, एकूण भारताची उद्दिष्टे कशी साध्य करू शकतो, तर याच्याविषयी त्यांनी जे आम्हाला सखोल मार्गदर्शन केलं ते आमच्या भविष्यात अतिशय उपयोगी असे मार्गदर्शन आहे. CEFR याच्या अंतर्गत हे जे ट्रेनिंग आहे, हे ट्रेनिंग घेतल्यानंतर की अतिशय सोप्या भाषेमध्ये किंवा अतिशय चांगल्या मार्गाने आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत आपल्याला कसं पोहोचायचंय याचा या ठिकाणी इथे असलेले मास्टर ट्रेनर असतील, कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचे जे काही टीम असेल, या टीमने ज्या पण काही ऍक्टिव्हिटीज घेतल्या त्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी इतक्या उपयुक्त होत्या. मला खूप काही शिकायला सुद्धा मिळालं. विद्यार्थ्याला 21व्या शतकातील भविष्यवेधी शिक्षणाच्या ज्या सर्व पायऱ्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला ह्या ट्रेनिंगचा नक्कीच फायदा होईल. In Kshamata, as we said, we are following 4 distinct pillars. I don't call them projects per se. They are 4 pillars. Like these 4 pillars, if they are ready, then the child is able to stand entirely for his lifetime, and he will have a decent life. तो बेसिकली हम लोग कोई भी वर्कशॉप करते हैं ना, तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. वन इज के the people who are undergoing change are coming together and having a feeling of community and camaraderie. मतलब एक तरह की एक PLC बन जाती है जिसके अंदर they are able to understand I am also facing the same trouble as the others are facing. तो ये एक main objective होता है. Second objective is of course the dissemination of the practice. Actually हम लोग we come from a space की जो schools certain practices follow करती है, वो school will become a good school. Does he have a basic learning readiness? मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी इसकी बनी है यहाँ. Does he know that half kg is more than 400 grams? That kind of awareness is very important. This is what we cover basically in foundational literacy numeracy. कोटक एजुकेशन फाउंडेशन का जो FLN का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की जो ब्यूटी है, जो कोर है, जो 6 स्टेशन मॉड्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके रिलेटेड जो उनके शेयरिंग्स आ रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. हमारे लिए काफ़ी उससे लर्निंग हो रही है एज अ ट्रेनर. एंड बिकॉज क्लास में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, आपको पता है, एंड उस लर्नर को कैटर करने के लिए और एक तरफ से हम लोग बोल रहे हैं कि निपुण का जो 21st सेंचुरी स्किल्स अचीव करने के लिए या लर्निंग आउटकम लाने के लिए जो हम लोग एक मिशन बोल रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए ये हमारा 6 स्टेशन मॉड्यूल है, वो बहुत इम्पॉर्टंट रोल प्ले करेगा. मॅम सोबत मी एकदम फ्री मध्ये एक्सप्रेस करू शकतो की मॅम मी तुमचे नाही बॉम्ब ठेवेल. एखादा माणूस एखादा विद्यार्थी काहीतरी वेगळं बोलला असता, मॅमला वाईट नको वाटावं, पण मॅमने त्याला असं सेफ फील करवलं की तो बिनधास्त बोलू शकतो. उनको क्लासरूम में ये मॉड्यूल कैसे दिखेगा, ये कैसे एक्चुअल विजुअली ये शो होगा, उसके लिए हम लोग उनको एज अ बच्चा, एज अ रोल, एक रोल प्ले थ्रू करके हम लोग ये सेशंस ले रहे हैं. एंड जिसमें वो एक 1st to 4th ग्रेड के बच्चों की तरह बिहेव कर रही है कि वो उस स्टेशन में जब आएंगे तब कैसे उनका बिहेवियर होगा, कैसे उनका रिएक्शन होगा. Spoken English is a very important pillar in the sense that we understand that in our current society, an individual who knows English is way high in terms of financial freedom, and there is a lot of confidence that is connected with knowing of English. This training program which we conducted for Nasik teachers was a big hit. Teachers enjoyed our digitized content which we showed them. We have given them the demo of digitized content where we have different activities, we have different templates for students, so teachers found it interesting. पासवर्ड कसा बनवलाय? प्रियाचा P कॅपिटल,
In our 1KEF platform, we have digitized content for middle school students. Teachers log in using their credentials and they have access to all the content. They also have self-paced module for their individual learning. In our digitized content, teachers can access the interactivities. They can use it during their classroom activities. English is going to be the language of communication globally, locally, and all over the world. Communicative English program at KEF seeks to disperse this language among youngsters in the middle school category because this is a window to the future. तुम्हाला माहित आहे ना इंग्लिश म्हणजे आम्हाला जास्तीत जास्त का लागतं कारण आपल्या हायर एज्युकेशन 12वी नंतर खूप कमी कोर्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये पूर्ण मराठीमध्ये आपण शिकू शकतो किंवा हिंदीमध्ये कुठलीही रिजनल लँग्वेज. Students today are moving into a digitized world which is very different from what we had as children. If they have to survive in this world, they need 21st century skills. And our aim at this workshop is to provide effective and efficient training for the teachers. English is connected with confidence, so yes, I do stress a lot on English. The major pillar is leading himself. Is the child leading himself or is he following his body? Essentially, हमारा goal is कि the student learning outcome improves. हम लोग जब चाहते हैं कि बच्चे एक 21st century learners बने, they are able to live a life of dignity, they are able to learn English and they are able to basically lead themselves. So that is our final outcome. School principals and school teachers are our kind of a step-by-step process to achieve that outcome. So they are like kind of objectives. Currently my objective is that if the school principals are able to have fun and prioritize learning, then the student learning outcome will improve. हर एक टीचर is a leader and every individual that is born on this earth, I believe that every individual which is born on the earth is a leader, provided that individual gets the conducive environment, gets the opportunities to develop and strengthen his own capabilities to enhance his leadership skills. मग काय होतं जेव्हा आपल्या प्रत्येकाची व्याख्या वेगवेगळी असली ना तर मग त्या दृष्टीने आपली कामं पण तशी वेगवेगळी होतात. आमचा असा मानस आहे की आपण फक्तच शिक्षक नाही पण पूर्ण शिक्षण जी सिस्टम आहे त्या सिस्टमला सुद्धा तेवढाच प्रयत्न करायचा आहे. आज का जो हम सेशन यहाँ पर टीचरों के साथ कर रहे हैं, इट इज़ टू फॉस्टर सेल्फ लीडरशिप विद इन देम कि किस तरीके से हम लोग अपने अंदर जो छुपी हुई हमारी लीडरशिप की क्षमता जो है, किस तरीके से हम अपने ही मूल्यों को, अपने ही कौशल्यों को समझे, पहचाने, जाने और उनको और स्ट्रेंथन करें ताकि हम हमारे बच्चों में या हमारे पीयर्स में भी उन क्षमताओं को देखें और वो उन क्षमताओं को भी जान सके कि उनमें वो क्षमता है लीडरशिप की जिसको वो एनहांस कर सके. Basically two thoughts. One is, however difficult a situation is, there is something I can do to mitigate that. ये मेरा बेसिक प्रश्न है. I can do it. वो एक बहुत strong perspective है. उन लोगों से मूल्य नहीं सीखता है, उन लोगों से मूल्य सीखता है जिनकी वो रिस्पेक्ट करता है. Secondly, can we have less stress in our life? Can we have fun in our life? So if we have fun, the teachers will have fun, the colleagues will have fun, the family will have fun, and eventually the children will have fun. So these are basically four pillars: foundational literacy numeracy, conversational English, digital sensitivity, and leading himself. तो 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हमारे यहाँ हमारे वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट किया है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये शेयर करना चाहूँगी हमारे लिए कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पर आए हैं आज तक, सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है और जो हमने नासिक क्षमता में डिस्कशन के वक्त लर्निंग की वैल्यू जो हमने उन तक शेयर की है कि एक लर्निंग या सीखना एक जो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा वैल्यू है, उन सब ने अग्री किया हुआ है
और उन सब ने प्रॉमिस किया हुआ है कि ये उनकी कोशिश रहेगी कि क्षमता के अंदर हम जो भी उन तक लेकर जाएंगे वो उस सीखने के वैल्यू को अपने स्कूल तक लेकर जाके जितना हो सके वो उनकी तरफ से सीखने की कोशिश करके अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे. सो दैट्स अ बिग विन फॉर नासिक क्षमता. थैंक यू सो मच.